Hello! Welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. This weekend of mine was pretty fun and crazy, so I thought I'd record it for you, and here I present to you a kind of weekend vlog kind of thing. I said kind of twice. But you get the gist. So without any further ado, let's just get into it. So on Saturday, I had to travel to my bua's place. When we reached there, all of us became pretty musical. I learned how to play Faded ka introduction wala part on a keyboard, and well, Ayansh I learned how to play Faded. Okay. I mean, thoda sa. ओके मैं ये देख रही हूँ. ये है पेरी पेरी फ्राइज विच इज सपोज्ड टू बी प्रीटी स्पाइसी. तो मैं खाऊं? स्पाइसी बिल्कुल नहीं है. भाई फ्राइज. My cousin and I are pretty close to each other. I'm just 1 year elder to him. We spent majority of our childhood together. So Bua recalled that she had recorded this bit of ours where during a family function, both of us were doing some crazy stuff. I was playing that proper bada wala dholki, and my cousin Dhruv was playing the chota wala damaru kind of thing. And I am going to put that for you guys because I want you to know I was a Bunty Bubbly fan when I was, 5 years old, 6 years old. And I also want you guys to see how cute a kid I was. I was a cute kid. I'm not gonna lie. Narcissistic behavior. मैं बंटी बबली गा रही हूँ. The next morning we had to come back pretty early, and by early I mean 12 o'clock, because it was Miss Radhika's 16th birthday and we could not miss it. So we came back. She was pretty excited to meet me and to see the cake that I had bought and everything. Although I can't take the credit behind the cake because one more common friend of ours made it for her, but I became the delivery person, so. But yeah, I bought it. I mean, brought it, if not bought it. Again, she was pretty excited to meet me. Hi. कितने साल की हो गई? 16. अफसोस हो रहा था लिखते हुए. पापा क्या है यार? मेरे साथ वो गया था, वो कहता पाजी के मजाक है. वो प्रोफेशनल है. यूकेलेली है ये. ओके ठीक है. इट्स लाइक डिसेंट. हम पूरे 12 गौरव दाचू नहीं है. गौरव दाचू है. ओए इसका फेवरेट कैरेक्टर इसके मुंह पे जा रहा है. पापा मेरी वाली का बर्थडे अभी आज निकाले सालों बाद. अब किसी और को लगाने तू भी लगा दी है. निकल ऐसे बोले सुवेन को तेरा चेहरा पसंद सा नहीं आया. हेलो भैया जी. हेलो. आप मेरे ब्लॉग में फीचर कर रहे होंगे. हाय राधिका. रोड में आ दी है. हां सीधा बोलो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट. like and subscribe and comment down below. Comment
तो अभी हम टी हट पर हैं और हम मैगी खाने वाले हैं और भी बहुत कुछ। हाँ मैगी कबाब सर पड़ रहा है। After having food and everything, Radhika wanted to go shopping, but my papa had totally different plans for us. Actually, there was no plan, but he decided we should do something different, something more fun. And there's this cafe here where you can do horse riding and that adventure swing sort of thingy. So we went there, and again, Radhika was pretty happy about it. Yup, people. मुझे नींद आ रही है, मैंने बोला एनर्जी दिखाने। हाँ मैंने बोला था कि हम थोड़ा एनर्जाइज कर सकते हैं अपने आप को कैमरा के आगे। मुझे आना भी था, हम हॉर्स राइडिंग करने आए हुए हैं, यहाँ से भी हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। रैंट सेशन विद मिस राधिका गुप्ता। मेरे को सोना है, मुझे नींद आ रही है। सोना तो मुझे भी है, बस फिर हम सो ही नहीं सकते, हम लोग स्विंग्स पे जा रहे हैं। हाँ हम स्विंग्स पे जा रहे हैं। I am going to experiment and be all. नहीं यार तोड़ दूर नहीं, मेरे पे एग्जाम आएगा। नहीं मैं चढ़ूंगी और मैं कूदूंगी, टूट जाओगे आप। मैं नहीं टूटूंगी, झूले जरूर टूट जाएंगे। आप टूटोगे, मुझे फीलिंग आ रही है फ्रेजाइल से। वो यार झूला, वो छोटी सी बच्ची बैठी हुई है, उसको नहीं उठाना। नहीं वो नहीं झूला, मैं वो टायर वाले झूले की। हम इस सब पे चढ़ सकते हैं क्या? हाँ जाओ, बट आई मीन गो वाइल्ड। नहीं बट एज रिस्ट्रिक्शन आई मीन नहीं है। There's this thing about me that I want you guys to know. I am an adventure enthusiast. If I see something that calls for daredevil activities, I'm gonna go for it. When it comes to things like climbing a rope sort of thing and all that funky activity, I'm gonna do that. Why? Because I aspire to go to Khatron Ke Khiladi. Dreams. Anywho, there was this proper not swing, but adventure activity setup that those people had done. Me and Radhika just thought of going ahead and climbing those stuff for vlog purposes. But I'm also a person who is a very law-abiding citizen. So there was this uncle who approached us and he went like, बेटे ये सारा 14 साल के बच्चों के लिए है, आप probably बहुत ज़्यादा बड़े हैं 14 साल की उम्र से, तो आपके लिए तो नहीं है, पर अगर आपको फोटोग्राफ्स खींचनी है वो आप कर सकते हैं. So initially being the keyword, both Radhika and I, for formality's sake, just climbed thoda so that we could, record something and we could call it as photography. मेरे को मेहनत कराओगे बेचारी बच्ची. ये पकड़ो. मैं बहुत अच्छी इनकम है, पर मेरा मन नहीं कर रहा अभी कुछ करने. मेरे को पता है तुम्हारी अच्छी इनकम है. हम पे छोटे बच्चे चढ़ रहे हैं, उनको मैं तोड़ना प्लीज. मैं सच्ची चढ़ जाऊँ उस पर? हाँ जाओ. गुड बाय. श्योर अलाउड है? हाँ कोई आएगा तो रोक लेंगे, वहाँ से उतर जाना. आएगा तो फिर रोकेंगे ना, वही ना मुझे पसंद नहीं जो मुझे कोई रोके. नहीं रोकने, चलो यहाँ से यहाँ तक नहीं जाना. डू इट फॉर द व्लॉग आयुषी. ग्राम तो क्या ही, यहाँ पे भी चढ़ सकते हो. ओह ऐसी. जाओ जाओ. नहीं फोटो खिंचाने के लिए कहा दीजिए. मेरे को तो लगा ये टूट जाएगा. रहने दे. मैं चढ़ता हूँ. क्या? मेरे को तो चढ़ना है, बट टूट गया तो नहीं टूटेगा. अगर टूटा इतने भारी नहीं हो आप. नहीं हो. फोटो हाँ.
Nice. मैं उल्टा चढ़ू यहाँ? हाँ ये हरकत नहीं करनी, निकाल लेंगे हम। नहीं निकालेंगे, फोटो खींच रहे। बस दाल पिट जाएगी, वो के लिए देंगे। अच्छा चलो, यहाँ चलना। मैं बोल रही थी मैं 14 साल की हूँ। मतलब मेरे लिए चलेगा फिर भी। मेरे लिए क्यों नहीं चलेगा? अब 18 साल की होगी। सिर्फ 4 साल। मैं इसमें भी उल्टा लटक सकती हूँ। जाओ। मुझे डर ही लग रहा है देखते हुए। छोड़ दो छोड़ दो। ओह मैं हेल्प नहीं करूँगी। इतने दम नहीं है मेरे में। Later, Ayansh also came in, and he also wanted to try all of that stuff there. So my dad asked both of us to go and get tickets. And when we went inside, there were 4 big humans standing and waiting for giving out tickets and everything. I asked that guy what was the age limit for those swings, and he said 16 years. And I was like, अगर मैं 14 साल की नहीं हो सकती, मैं 16 साल की तो हो ही सकती हूँ ना. So I just with full confidence went like, so that means कि हम दोनों ये कर सकते हैं. All those 4 people just gazed at us with confused looks for about 5 seconds or so, and then I had to give a confirmatory statement कि हम 16 साल की ही हैं. Very law-abiding citizen. It became all awkward, and he said, "Okay, then sure." I mean, उसको पैसे मिल रहे थे, so yeah. Anywho, we got 3 tickets, and we did all of that stuff that was meant for 16-year-olds. She was a 16-year-old. I was 18-year-old. But you get the point. आरुषि I've been holding out. It's hard to hide the truth. You've been good to me, and all I do is lie to you. To you. You should know that there's another side of me. Another world, take a trip. There's something you should see. If you're ready, let me know, then I'll take you with me. Take you with me, show you all my fantasies. Show you all my fantasies. जाओ. Show you all my fantasies. It was out of fear I turned you away. चल जा जा जा। Hold on to me, here's a ticket to my darkest place. Now you know that there's another side of me, another world, take a trip, there's something you should see. If you're ready, let me know, then I'll take you with me. Take you with me, I'll show you all my fantasies. मैं यहाँ से क्या? Show you all my fantasies. उतना तो आसान है। जंप। इससे ना मैंने vlog के चक्कर में किया पता है. After that, we went home, and I somehow got permission for a night over, and I had also gifted Radhika a ukulele, and she was pretty excited to learn how to play it.
I can see India's flag right in front of me. It's not a flag, just the tricolors that have lit up the flyover. मैं पुल बोलने वाली थी. The tricolors that have lit up the pull. So this is it for today's vlog. I hope you guys enjoyed it, and if you did, then don't forget to press that subscribe button and also that thumbs up button down there. Leave a comment down below, and I'll see you guys in my next video. So until then, bye.